Bukannya sok jagoan, bukannya sok kebal, bukannya anti peluru. Tapi logikanya kita berbicara tentang medis guys, walaupun biologiku cuma punten 3. Apabila karbohidrat masuk dengan gula tes manis tanpa ada pergerakan olahraga atau gerak-gerak dikit-dikit, maka udah dipastikan kau akan divonis diabetes eskranodos L-kontolos. Tapi kalau kau berolahraga walaupun kau badminton kalah terus, lari terus, jalan, mengeluarkan energi keringat dan bekerja keras, gula diabetes entrakondoltos pun segan sama badan itu berkotau. Sehormat itu kesehatan samamu. Hindi dahil nagmamagaling, hindi dahil nagmamatigas, hindi rin dahil parang hindi tinatablan ng bala. Pero kung iisipin natin, pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa medical guys. Kahit na ang grado ko sa biology ay pasensya na, 3 lang. Kapag pumasok ang karbohidrat na may kasamang asukal at matamis, tapos wala kang kahit anong galaw o ehersisyo, siguradong mahahatulan ka ng diabetes eskranonos, L-kontolos. Pero kung nag-ehersisyo ka, kahit palagi kang natatalo sa badminton, ituloy-tuloy ang takbo, lakad, naglalabas ng enerhiya at pawis at nagsusumikap. Kahit ang diabetes na may asukal entrakondoltos ay mahihiyang lumapit sa katawan mong batak, ganoon kataas ang respeto ng kalusugan sa'yo. ये कोई बहादुरी दिखाने की बात नहीं है, न ही यह दिखाने की कि मैं अजय हूँ या मुझ पर कोई असर नहीं होता। लेकिन बात यह है कि हम यहाँ मेडिकल की बात कर रहे हैं दोस्तों। भले ही मेरी बायोलॉजी में नंबर बस 3 ही थे, अगर कार्बोहाइड्रेट्स और मीठा शुगर टेस्ट के साथ शरीर में जाए और उसके बाद कोई एक्सरसाइज या थोड़ी बहुत भी शारीरिक गतिविधि ना हो, तो यह तय है कि तुम्हें डायबिटीज का ऐलान कर दिया जाएगा, एस्क्रानोनोस L-कॉन्टोलोस। लेकिन अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, भले ही बैडमिंटन में हमेशा हारते रहो, दौड़ते रहो, चलते रहो, ऊर्जा खर्च करो, पसीना बहाओ और मेहनत करो, तो डायबिटीज की शुगर भी तुम्हारे उस सुस्त शरीर से डर जाएगी, तुम्हारी सेहत को उतनी ही इज्जत मिलेगी। 不要假装自己是英雄，不要假装自己刀枪不入，不要假装自己刀枪不入。但从逻辑上讲，伙计们，我们正在谈论医学，尽管我的生物学水平只有3点。如果碳水化合物与糖一起进入体内，在没有任何运动或活动的情况下进行甜度测试，那么你肯定会被诊断为糖尿病。但如果你坚持运动，即使打羽毛球一直输，你依然坚持跑步、散步，消耗体力，挥汗如雨，努力拼搏，糖尿、机长都舍不得让你的身体累，这才是健康对你的尊重。